बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट की स्पेशल एपिसोड के साथ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से मैं सलमान हैदर और तेहरान के भी उस मकाम पर मौजूद हूँ जिसको अपने हवाले से एक इनफरादियत हासिल है। कहने को तेहरान के लोग इसको मुसल्ला कहते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त पूरी दुनिया की इस इलाके की तरफ है और वजह यह है कि इसका इलाका है मुसल्ला, जहाँ इस वक्त लाखों ईरानी और गैर मुल्की इस वक्त मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि मेरे बाएं जानिब ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई साहब का जश्न खाकी है। न सिर्फ उनका बल्कि उनकी साहबजादी का, उनकी बहू का, उनके दामाद का और 14 माह की उनकी पोती का। ये तमाम ईरानी खराज अकीदत पेश करने, सलाम आखिर करने इधर पेश हैं। यहाँ मातम भी हो रहा है, यहाँ गिरिया भी हो रहा है। अब बता रहे हैं ईरानी कि हमारी वारफ्तगी क्या है अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ। उनका इस दुनिया से जाना उनकी नज़र में ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, ये साबित कर रहे हैं। और जितनी गर्मी इस वक्त शदीद है, उसकी मौजूदगी में लाखों अफराद के इधर मौजूद होना ये बात बजाते खुद बता रही है कि ये अपने लीडर से कितना प्यार करते हैं। अब रही बात इन तमाम चीज़ों के होते हुए इधर के लोगों की नुमाइंदगी की, तो मेरे इधर आने का मकसद ये था कि इंटरनेशनली दो क्वेश्चन, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया से दो क्वेश्चन रेज हुए थे कि क्या ईरान आफ्टर दैट कुर्बानी, खामनाई साहब की कुर्बानी के बाद आइसोलेट हो गया है। तो पहला जवाब है कि नहीं। ईरान की आइसोलेशन तमाम लोगों की मौजूदगी और इन तमाम लोगों की टेक केयर के लिए जो एक सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में मौक़िफ़ रखे गए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम सड़कों के ऊपर है और फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके की फैसिलिटी है। इस गर्मी के मौसम में पानी की एक सर्टन, जिसे कहते हैं ड्रिजल, उसका खास इंतजाम किया गया है क्योंकि गर्मी में ना रहे। और आइसोलेशन का इससे बड़ा क्या जवाब होगा कि दुनिया के 100 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स, जी हाँ, डिग्निटरीज, जिसमें बहुत से ममालिक की आला क़यादत भी शामिल है, यानी उनके हेड ऑफ स्टेट्स भी शामिल हैं। सिर्फ पाकिस्तान में कहें तो जहाँ सिर्फ अगर आना था तो शहबाज शरीफ साहब आए, वज़ीर आज़म आए, फील्ड मार्शल जनरल साहब आए, नहीं। पाकिस्तान की तरफ से मीडिया की रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पर, पाकिस्तान सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पर, रिलीजियस स्कॉलर्स की रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पर, आम आपकी रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पर। ये बात ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान का रिश्ता ईरान से थोड़ा ज़रा हटकर है, दोस्ती से ज़रा बुलंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन 100 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन देखते हुए कहीं से ऐसा मालूम नहीं होता कि ये ईरान कहीं आइसोलेट हुआ है। दूसरी चीज़ कि ईरान शायद खुराक के हवाले से डिप्राइव्ड है। आप यकीन जाने, मैंने इस ज़्यादा खुराक की वारफ्तगी किसी जगह पर भी नहीं देखी जितनी मैं इस वक्त ईरान के अंदर देख रहा हूँ। अब यहाँ एक एक बंदे के खाने का इस तरीके से इंतज़ाम है और जो लंगर का इंतज़ाम है, जो तकसीम करने का इंतज़ाम है, रात चलते लोगों को बिठा बिठा के खिलाने का इंतज़ाम है, क्या ब्रेकफास्ट, क्या लंच, क्या डिनर, सुबह से रात तक जो जो वक्त होता जाता है उस हिसाब से यहाँ खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। और बताया जा रहा है इस तमाम लोगों की मौजूदगी में कि खामनाई साहब, आपका जो मिशन है हुर्रियत के हवाले से, आपका मिशन जो रेजिस्टेंस के हवाले से, आपका मिशन जो सरेंडर ना करने के हवाले से, उन्होंने कहा था ना कि इमाम हुसैन का कॉल कोट किया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बात कैसे कर सकता है। तो ये पैगाम मेरा ख्याल है इन ईरानियों में ज़बरदस्त तरीके से पहुँचा हुआ। चलते हैं लोगों के पास, जानते हैं, क्योंकि ईरान के मेयर से भी हमारा टाइम हुआ है, स्पेशली तेहरान के जो इधर के CM कहलाते हैं, उनसे भी जानते हैं इंतजामात को देखते हुए बीगा एक सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो क्या जानते हैं। आम पब्लिक से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ साथी आज़ाद से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं।
हमारे साथ अली रज़ा ज़कानी साहब हैं, मेयर हैं तेहरान के, और इस तमाम इंतज़ामात के हवाले से उनका एक सर्टन किरदार भी है। अभी एक कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे और कॉन्फ्रेंस का उन्वान बड़ा ज़बरदस्त था। वो ही सवाल इनके साथ करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। You just conduct a conference, the emergence of the new world order. What does it mean? معناش چیه؟ معناش این هستش که ضوابط حاکم بر دنیا که بعد از جنگ دوم جهانی حاکم شده و دستگاه‌ها و نظامات بین‌المللی حریف آمریکا نمیشن و به جای قانون امروز در دنیا توسط آمریکا قدرت تحمیلگری و قانون شکنی حاکم شده. نظم جدید یعنی نظم قانون و استقرار همزیستی مسالمت آمیز کشورها و کمک به همدیگه برای رشد و پیشرفت و آبادانی در منطقه و در جهان. It means that the order that was established after the Second World War is not working anymore, and it cannot contain the United States, and it is bullying the world, and it is putting pressure on the world, and they can do whatever they want in violation of the international law and international regulations and norms. So it means that in the new world order, it would not be like before, and they cannot force their will to the world, and the nations would stand against their bullying. And what is your intention when you gather almost 100 countries representations? Some of head of states are here. What you conceive with this impression? هدفتون برداشتتون از این جمعیتی که تشکیل شده، مهمان‌هایی که اومدن چیه؟ بیشتر از 80 هیئت اومدن و جمعیتی که دیدید. این جمعیت برای همدردی با ملت ایران اومده و از طرفی هم نشان از همراهی در جهت ضدیت با زیاده‌خواهی‌های آمریکا داره. لذا خود این جمعیت پیام ویژه‌ای داره به این عنوان که به زودی ما شاهد جهانی خواهیم بود که ظلم و زور آمریکا در اون به سمت حداقل میل خواهد کرد و کشورها در کنار هم یک نظم نوین عادلانه‌ای رو رقم خواهند زد. The population who has come to Iran are here to condole with the Iranian nation on the morning of the Supreme Leader's martyrdom. But the other aspect is that they share the same view of opposing the American bullying and American oppression, and it actually promises a new future in which the new order would be established, and the nations and the countries would stand united against the Americans, and they would not be able to put the pressure on the other countries, and they cannot actually rule over the world the way they used to do. In all over the world media which is gathered here, I interact most of them. They conceive impression Iran won the war. Then just I need your answer regarding this. When President of America said that we will raise Irani's civilization, how did that make you feel? خیلی باورشونه که ایران برنده جنگ بود. وقتی ترامپ گفتش که یک تمدن ایران رو میخوام از بین ببرم، برداشت شما چیه و نظر شما چیه؟ ترامپ نفهمید چی گفت. یعنی تمدن از بین بردنی نیست. علاوه بر این که او نتوانست به هیچ یک از خواسته های خودش برسه، این که عیبگویی نیست. او میخواست نظام اسلامی رو سرنگون کنه. او علاقه داشت و اعلام کرد که میخواست ایران رو تسخیر کنه. او بیان داشت که میخواست ملت ما رو به اسارت بگیره. اینا چیزایی است که خیلی صریح بیان کرد و بعد هم ذکر کرد که ایران نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه، ذکر کرد که قدرت موشکی ایران باید محدود شه، ذکر کرد که ایران از پشتیبانی مقاومت در منطقه دست برداره. هیچ یک از این نکات اتفاق نیفتاد و امروز ما قوی‌تر از گذشته ایم و آمریکا ضعیف‌تر از گذشته.
لذا معادله معلوم میکنه کی شکست خورده کی پیروزه و از این جهت ترامپ بیشتر یک شومنی است که علاقه داره ظهور و بروز و به یک نوعی اون جنبه‌های نمایشگری خودش رو به نمایش بگذاره. ای کاش او در یک فیلم کمدی محور فیلم قرار می‌گرفت. اون موقع این فیلم حتما پرفروش‌ترین فیلم دنیا میشد، خاطر دلقک بازی که انجام میده. اما او نه ملت ما رو شناخته، نه تمدن ما رو شناخته، نه ایران رو شناخته، نه اسلام رو شناخته و حتما شکست خورد و این شکست اگر زیاده خواهی کنه که بنده حدس میزنم او قانع نخواهد بود، علاقه داره که شکست بزرگتری بخوره، میتونه تجربه کنه. Trump did not realize what he is saying, that civilization cannot be erased, and the Iranian nation is so great that he cannot demolish the country or demolish the civilization. He made a lot of claims, and none of his objectives were made. He said that I'm going to destroy the nuclear program of Iran. He failed. He said that I'm going to erase the Iranian missile program. He failed. He said I want to make a regime change. He could not do that. He said he wanted to stop Iranian regional policy. He could not do any changes to that. The reality is that he has failed, and the battleground shows that who has won the war and who has lost the war. So when he says such a thing, it's because he is a showman and he's just making claims that he does not understand what it is. He does not known and realized what a great nation Iran is and has, and he does not know what he is talking about. He's a showman who is just giving some jokes, and if it was a comedy movie, it would be a best-selling movie for the world because he is making a lot of fun but by what he is claiming. If he wants to make excessive demands, which is likely because he has not learned any lessons from recent war, if he decides to take a bigger lesson, we are ready to give him a bigger lesson, and if he attacks Iran again, there would be a huge defeat for him, stronger than before. Last question. Do you think the agreement with the US will actually honor? در نظرتون تفاهم با آمریکا پایدار میمونه؟ Or could it start again? آمریکا پایبند نخواهد بود. آمریکا به هیچ چیزی پایبند نخواهد بود و جز حرف زور و قدرت چیزی رو متوجه نمیشه. مثل یک حیوان وحشی است ترامپ که جز در واقع برخوردش به یک جسم محکم و سنگ او رو باز نخواهد داشت. لذا معتقدم که آمریکا برای این 14 بندی که در تفاهم نامه آمده، برای هر بندش یک نقشه‌ای رو کشیده برای اینکه به او عمل نکنه. لذا بخش اولش که ناظر به حوزه لبنان بود رو عمل نکرد، زیرش زد. یا بخش دوم ناظر به تنگه باز دنبال یک راه دیگه ای رفت، Even غزه. لذا هیچ یک از آنچه که او بیان میکنه به او پایبند نیست. الان در غزه جنایت در حد اعلاست، یعنی واقع امرش بیش از 2 سال مردم در غزه دارن قتل عام میشن، اما آمریکا تشویق میکنه و به هیچ وجه مانع نیست که این مسلمان کشی که در غزه داره اتفاق میفته رو جلوگیری کنه. لذا معتقد هستم که آمریکا امروز نیاز به تفاهم داشت و بعد از رفع نیاز اولیش حتما در واقع بدعهدی او ثبت شده است و او بدعهد. The Americans have never committed to anything, and they never keep their promises.
So I'm quite sure that when they were writing the MOU, that for every single item they were thinking of the ways that they could violate it and breach it and do something else. And you are seeing the first item was about the ceasefire in all fronts, and it has not happened. Another item was about the Strait of Hormuz. Despite the agreement, they are following another route and they are trying to do something else. Or in Gaza, you are seeing that it's nearly 3 years that the genocide is going on there constantly, and people are being killed. Muslims are being killed, and not only is not stopping it, he is actually encouraging it and supporting the Israelis' crimes. So the way they are working is always a violation of the agreements that they make, and the only way to stop the Americans is to force them into something, not agreeing with them with something. If they are forced, they would be stopped. Otherwise, they would violate and they would change their position and take other steps that is against the agreement that they have made. थैंक यू वेरी मच। ये थे जी ईरान के मेयर जो बता रहे थे अपने इस MOU से मुतलिक जो इनका अमेरिका के साथ है और उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। और ये ज़ाहिर बात है ईरान के मेयर हैं तो पब्लिक की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त सियासी लिहाज से तेहरान में इस वक्त यही है और इन्हीं की जिम्मेदारी थी इस तमाम अरेंजमेंट को करना। एक छोटी सी ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ हुकूमती एक डिग्नेटरी हैं मोहम्मद अली शफ़ी। ये डिप्टी मेयर हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशन और इस वक्त ईरान के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं उनके हवाले से। और बींगा ईरानी वो इस इवेंट को स्पेशली इस फ्यूनरल की तकरीब को वो किस तरीके से देखते हैं वो भी उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली, बींगा ईरानी, just remember 28th February when Khamenei Saab Shaheed, when our schools under attack. What was your first reaction? As I remember, my first reaction was not a shock because I expected to receive those attacks from the United States and Israel after the previous war. But at first, I was thinking that if our leader was in his house or not. I hope that. So you don't believe in that news? At first, we didn't have the news that he was martyred in his house. We understand that his house and the buildings, the offices around it was hit by the missiles of United States, but I thought that he's not in his house. And after, I think, one day, the news arrived that he was in his house and he was being terrorized by United States. At that time, it was some kind of shock and believe that it's something that happened in the United States. But I think all of the Iranians think that our military and military forces should do something against that. And that was the time that was news of the missiles that was shot from Iran to bases of the United States came out. And it's some kind of like I could say, some kind of sadness, some kind of shock, besides some kind of proudness because of our military forces that were ready and they started shooting missiles like in a few minutes, less than an hour. Afterward, after this attack, when you confirmed Khamenei Saab Shahadat, you or your family member or any other they evacuate from Tehran? No, I was in Tehran all the time of the war. Right. After the ceasefire, I went out of Tehran for 1-2 days because all of that time I was. But you keep your family in a safe place? No, in my own house. Own house? We didn't change our place and Alright. those things. My own house. All right. Do you trust the ceasefire is going to be concrete? No. No. Almost none of Iranians believe that it will be concrete. We think that United States will break the ceasefire and they will start the war again. And as our military says that we are ready for that, we're prepared for that, and we as municipality we are doing our job to, if that happened again, the war started again,
bring the services to the citizens of Tehran, the best services we could provide. But as ordinary citizen, I don't believe that they would keep the ceasefire from the side of the United States. Some other question. You are representing government as well. You are part of it. What about Pakistan's placement in all this scenario? Especially when Iran was attacked, Pakistan not only condemned but at political and military leadership, it played a major role. They were here twice or thrice for mediation. So, would you like to see Iran-Pakistan relation grow more? Look, I think Pakistan has tried to come closer to Iran. It is closer. We are brother nations. But the governments have relations. They are trying to get closer to Iran and help to solve this problem in the region, because it's not only the problem of Iran, it's the problem of the region, and all of the countries in the region are facing the issue. And Pakistan, as a country that has good relations, that had good relations with Iran, tried to come closer and help to solve the problem. And I think after this situation has passed and after years, both countries become more closer to Iran, because as I see in the city, in the things of the people, ordinary people, citizens, I think that they know more about Pakistan right now in compare with before the war. They know more about the Pakistan. They like more Pakistani people, and they care more about the Pakistani people. But I don't know if the governments they continue this path to making the relation better or not. But the thing I see is that the people of Iran and the people of Pakistan will come more closer to each other. Both will. Then what about another very important question? The state of Hormuz, no doubt, affected the global economy. How much did your household expenses and your surrounding affected with Abnaya Hormuz blockade? Look, you know, and everyone know that we have many problems since due to the sanctions of the United States. Even before the war, we had high inflation and the rising of the price of the dollar in our country. I think after the closing of the Strait of Hormuz, mm, mainly in the mainly in the needs or necessary needs of the people, we didn't have any problem because of the blockade of the Strait of Hormuz. But the problems that we had, the economic problems that we had before the war, that has been continued, and also the war cost our infrastructures and the other things of the country. That caused like multiplied our problems, economic problems. But we don't believe that it's related to the blockade of the Strait of Hormuz. All right. And what are your hopes with new Supreme Leader Mustafa Khamenei? I think since he's younger than our previous party leader, I think he could manage things more from the field. He could come more among the people and become like more connected to ordinary people and try to solve the issues and the problems of the people more in the connection with them. And but my first hope is that the security issue in the region and in our country become solved, so we could see him in person. Even in media, that's no problem. But we could see him in person. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली। ये थे मोहम्मद अली, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और बिल्कुल रियलिटी चेक रहे थे कि कोई शक नहीं, इकोनॉमी की जो कंडीशन है ईरान के हवाले से जंग से पहले, जंग के दौरान मल्टीप्लाई ज़रूर हुई हैं, लेकिन रही बात आम रूटीन की चीज़ों के तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस वक्त तेहरान की सड़कों पर हूँ, मुख्तलिफ ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम अयूब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। अयूब खोसा साहब, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ सवालात, ये तो सब करने हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप इधर मौजूद हैं, एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मकसद क्या है? एक तो खामनाई साहब का ये सफ़र आखिरत तो है, और क्या मकासद है?
देखिए अगर हम अपने आर्ट और कल्चर के हवाले से मैं देखता हूँ तो मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक आर्ट और कल्चर की या उसके एक नुमाइंदे के तौर पे है और मुझे एक खुशी इस बात की भी है कि हमारी जो भी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं या बड़े-बड़े जो अदाकार हैं, एक्टर्स हैं, वो नहीं है, मैं हूँ, तो उन सब की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ठीक। अच्छा और आप समझते हैं कि ईरान की जानिब से ये तदफ़ीन के सारे जो मराहिल हैं, जिस तरीके से इसको तैयार किया गया, अब यहाँ से मामला कुम जाएगा, फिर कुम से मशहद जाएगा और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग को एक्सपेक्ट किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर अवामी सतह पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मौक़िफ़ लगे हुए हैं, ये सब लगे हैं। वो जो एक आइसोलेशन की तरफ इशारा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो आपको कहीं नज़र आई? नहीं, नहीं, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि आइसोलेशन का तो वो मतलब वो पागल ही आदमी होगा जो ये बात सोचेगा कि या शायद कोई आइसोलेट हो गया। यानी आपको आइसोलेशन किसी भी सतह पे, किसी भी सतह इवन अगर आप मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल हाँ, मैंने जैसे पहले कहा कि मगरिब का एक डोमिनेंस है मीडिया के ऊपर, चाहे वो अमेरिकन वो मीडिया हो, चाहे बाकी डोमिनेंस है, लेकिन ईरान ने अपनी आवाज़, अपनी ताकत के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। बहुत शुक्रिया अयूब फ़ज़ल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अयूब फ़ज़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेरा ख़्याल है कि जहाँ नुमाइंदगी तमाम साफ़ी हज़रात की है, पाकिस्तान की तरफ से हर मकतबा फ़िक्र की है, रिलीजियस स्कॉलर से लेके हमारे फ़ील्ड मार्शल हों या प्राइम मिनिस्टर हों, ये सब मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती ज़रा आम रूटीन से थोड़ा हट कर है। अलेक्जेंडर दिमित्री हैं, ये कनाडा से हैं। इनकी आंखें इस वक्त क्या देख रही हैं, ये क्या पैगाम लेके जा रहे हैं और स्पेशली इस फ्यूनरल के सारे इवेंट का, ये इनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दिमित्री. Dimitri, you came here from Montreal. Have you ever witnessed this sort of funeral in your life? Well, I have. I was at Sayed Hassan Nasrallah's funeral in Beirut. It was similar to this. There were probably, this was the actual final day of the funeral. I would say 200, 300,000 people inside and outside the stadium, and many, many persons overwhelmed with emotion, and similar sentiment here today. It's unusual to see so many grown men overcome by grief as I have today. What you perceive, Iran is trying to give some message to world. What you understand, what they are trying to. Well, I think one message they clearly want to communicate is that the narrative that the supreme leader was despised by almost the entire population is a flagrant lie. Of course, he had critics and opponents inside the country. A significant percentage of the population probably is opposed to the Islamic Republic, but you can see here and in the streets, there are also a great many people who have tremendous affection and respect for the supreme leader and who support the government, even if they may be critical from time to time. This is a much more complex society than we have been led to believe. And I think that they want to communicate to the broader world, and particularly the West, how much support there actually is for the Islamic Republic. And I'm not talking about Western media, but some Western media said that Iran is in an isolation position, especially after Khamenei Shahadat. Do you think that? Well, actually, I did a report on my own channel, Reason to Resist, just about that very subject last night, and I showed video clips of foreign dignitaries who came to Iran yesterday and paid their last respects. The Russians sent Dmitry Medvedev, the former president. The Chinese sent high-level officials. There were over 100 countries represented. Even the Saudis and the Qataris sent very important officials who stood before the coffin of the supreme leader and showed their respect for his life and legacy. So it may be that in the Western world, Iran is isolated amongst the governments, although I think the people, there's more and more support for Iran. But in the non-Western world, Iran is not isolated. Last but not least, you visited many areas, even Menab School and near Abna Hormuz, or many things. You think, I'm talking about your a maximum optimistic approach, this MOU going to be intent or going to be fulfilled? Well, I personally don't believe so. I've identified at least 8 violations of the MOU, serious violations that Trump has committed on multiple occasions. Just for example, today, there were credible reports that
he's bringing a lot more military equipment into the Persian Gulf, and the MOU explicitly prohibits that. It prohibits the U.S. government from threatening Iran. Trump has repeatedly done that since the MOU was signed. He's even used genocidal language. He has not given any of the stolen assets back to Iran. He is not putting pressure on Israel as he could to withdraw from Lebanon and stop slaughtering Palestinians and Lebanese, even though that's explicitly prohibited by the MOU. But I still think that the Iranian government does have legitimate reason to do this. The most important one is that they've gotten the blockade lifted, and they are generating a lot of revenue through the sale of oil, and I'm sure that they need the money. थैंक यू वेरी मच दिमित्री। ये मॉन्ट्रियल कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथी थे, अभी और मुख्तलिफ हैं, अमेरिका से भी हैं, बरतानिया से भी हैं, चिली से भी हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ से बात करें। अनदर जर्नलिस्ट इज हियर, उनसे बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट टू हैव वर्ड्स। यू आर हियर in Khamenei funeral. Have you ever witnessed this sort of funeral in your life? Yes, I was at the funeral of Hassan Nasrallah in Beirut. That was also very, very full of emotions and lots of people. But I think here is even a next level. I already placed a question, and again for you as well. Iran are trying to place a message to world, not even their friends, even their enemies. What do you think? That they stand together, and they are many people, and they are strong, and they have great trust in their leader. So after Khamenei Shahadat, you think public of Iran is more strengthened than before 28th of February? Yes, I think so. Yes, because now they know their enemies even better, and they know how to protect themselves, and I think they became stronger and stronger. Yes. Cheers, Mike. Thank you. जी, जिस जगह से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, सेम उसी तेहरान के इलाके मुसल्ला से इसका अख्ताम करते हैं। कम से कम आज सारा दिन जो लोगों से बात हुई, जो सियासी लोगों से बात हुई, इधर के साफ़िया ज़रा से जो बात हुई, कम से कम इस बात का अंदाज़ा हो गया कि खामनाई साहब की शहादत एक जस्से खाकी की शक्ल में इस वक्त सामने मौजूद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कुर्बानी थी उनकी, इनसे मुतालिक इधर के मकामी लोगों का ये मानना है कि खामनाई को 28 फरवरी को भी मालूम था कि आज मेरे पर हमला होना है, और ऐन उस जगह पर मौजूद थे विदाउट किसी सिक्योरिटी के, कि क्यों ना जाते जाते कौम को फिर एक बार फिर से इकट्ठा कर दे। वो जो मुजाहरे जनवरी के महीने में ईरान के अंदर चल रहे थे, वो जो लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से कहीं परेशान थे, वो लोग जो महंगाई के हवाले से कहीं परेशान थे, खामनाई साहब की कुर्बानी ने और उनके खानवादे की शहादत ने पूरी ईरानी कौम को एक बार फिर से इकट्ठा कर दिया। तो पहले कोई सोच भी रहा था तो कम से कम इन लोगों को देखते हुए, इधर के लोगों से बात करते हुए, कम से कम इस बात का कोई गुमान न करें। मुझे कहते हैं ना कि कुर्बानी ने एक कौम को दोबारा से इकट्ठा कर दिया। अगर देखना है तो हमारे साथ यहाँ आकर विजिट करके जरूर देखें। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।